morning, guys. We are now starting chapter 1, continuing the chapter 1, and this is the part 5. Laws for the resultant force. There are two types of laws to find the resultant force of the number of given forces. First one is triangular law of forces. Triangular law of forces. And the second one is polygon law of forces. Polygon law of forces is the extension of triangular law of forces. What is triangular law of forces? It states if two forces are acting simultaneously on a particle. Suppose two forces are acting simultaneously on a particle. This is the particle. Two forces acted F1 and F2. Two forces are acting simultaneously on a particle. Be represented in magnitude and direction of the two sides of the triangle. These two forces are represented by the two sides of a triangle. This is the triangle. Suppose these two forces are represented by the sides of two sides of the triangle. Suppose this is F2 and this is F2 and this is F3, F1. This two F2 is represented by the first side and F1 is represented in the another side. And the third side of the triangle is represented. This third side is called magnitude and direction of the triangle. Magnitude and direction of these two forces. But it should be in opposite direction. Means this is the resultant. If two forces are acting simultaneously on a particle, and these two forces are represented by the two sides of the triangle, if let F2 and F1, then the third side represents its magnitude. Which magnitude? These two forces magnitude, and direction should be opposite of this direction. F1, F2. See, F2 is rotating this anticlockwise and F1 also rotating anticlockwise. But R is not. R is direction. R direction is opposite to the F2 and F1. Means these two are anticlockwise, but this is clockwise. Don't uh, don't do this. F1 and R. This is wrong. Magnitude direction should be opposite to the direction of F2 and F1. What is polygon law of forces? It is the extension of triangle law of forces. It states if a number of forces acting simultaneously on a particle, number of forces are acting simultaneously on a particle, be represented in magnitude and direction. Suppose I am taking A1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Direction. If a number of forces acting simultaneously on a particle, फोर फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, बी रिप्रेजेंटेड, किस में रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नेट बाय द पॉलीगन, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ द पॉलीगन. तो एक पॉइंट यहाँ से लेंगे ए के पैरेलल में लेंगे, पहुँच गए बी से शुरू करेंगे, B2 के पैरेलल जाएंगे, पहुँच गए सी पे, सी से स्टार्ट करेंगे, 3 के पैरेलल जाएंगे, डी, दिस इज 1, 2, 3, 4, 4 के पैरेलल जाएंगे, ई तक पहुंच गए, दिस इज 4. नाउ जॉइन द फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, बट direction should be in opposite direction. This is showing resultant, but direction is opposite to the direction followed by the other forces. It is written that then the resultant of all these forces may be represented in magnitude and direction by the closing side. This is the closing side of the polygon, taken in opposite order. Graphical method for the resultant force.
It is another name or this is also called, another name is polygon law of forces. Same method we are following as we are following the polygon as we are following the polygon law of forces. This is a question. A particle is acted upon by three forces equal to 50 Newton, 100 Newton and 130 Newton. A particle is acted means in a particle three forces are acting, 50 Newton, 100 Newton and 130 Newton along the three sides of an equilateral triangle. Means these three forces are like on sides of an equilateral triangle. These three forces are sides of an equilateral triangle. This is equilateral triangle. This is showing three sides, 50 Newton, 100 Newton and 130 Newton. This is A, B, C. Equilateral triangle means all have 60 degree. All have 60 degree angle. Along the three sides of an equilateral triangle is showing along the three sides. So we are taking each side up, each side a forces. A side we are taking 50 Newton, B taking 100 Newton, C taking 130 Newton. Taken in order. Taken in order. You see, taken in order means this direction. These are all are in anticlockwise direction. In means one order. Find graphically magnitude and direction of the resultant force. Find graphically magnitude and direction of the force. How you are taking graphic magnitude of the force? Just take an initial point A and start from that parallel to first 50 Newton in parallel direction. You take 50 centimeter. Suppose you are taking 1, 2, 3, 4, 5 means 1 centimeter scale. For graphical method you have to use scale. In x axis you just take 1 centimeter equal to 10 Newton, or you can choose your according to your, but for it is relevant you can take 1 mm equal to 10 Newton, but it is showing very less value. Graph plot will be very small in this type of, so take accordingly the dimensions. ये से स्टार्ट कर रहे हो 5 सेंटीमीटर ले लिए इक्वल टू 50 न्यूटन, बी तक पहुंच गए। फिर बी में कितना, बी लाइन में जो 100 न्यूटन दिया हुआ है यहाँ से स्टार्ट करोगे 100 मतलब 10 सेंटीमीटर होगा और उसके पैरेलल लोगे तो क्या हो गया ये 100 न्यूटन। ये बोलो also give the directions and this is 100 Newton. You reach the C point and from 130 Newton you just one line means this is you 5 centimeter, this is 10 centimeter, 10 centimeter, 100 Newton, this is 130 Newton means 13 centimeter. You reach the point D point and then अब ज्वाइन कर लो D से A पॉइंट को ज्वाइन कर लो, ये हो गया आपका रिजल्टेंट, योर रिजल्टेंट। और डायरेक्शन क्या होगा इन दोनों का, इन तीनों का डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज है, बट इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरफ से करेंगे इस राइट साइड में करेंगे तो क्या हो गया, ये एक ही ऑर्डर में हो जाएगा लेकिन रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर। सो इट इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन। इफ यू मेजर दिस डिस्टेंस सपोज 5 सेंटीमीटर, 7 centimeter, 6 centimeter, whatever, you just multiply, suppose 7 centimeter, then it is, if it is 6.8 centimeter, then it is 68 Newton. The following forces act at a point. Suppose this is a point. This is point. You know, we know this is east, this is west, this is north, this is south. First given 20 Newton inclined at 30 degree towards north of east. 20 Newton, where it is inclined, it is inclined at 30 degree towards north of east, north
ऑफ ईस्ट मीन्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट मीन्स ईस्ट के नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मीन्स ईस्ट के नॉर्थ में, नॉर्थ के ईस्ट में नहीं, ईस्ट के नॉर्थ में। ईस्ट ये है, ये लाइन ईस्ट है, ईस्ट के नॉर्थ ये है, और कितना डिग्री पे है, 30 डिग्री। तो दिस इज यू आर गेटिंग 30 डिग्री एंड व्हाट इज इस वैल्यू 20 न्यूटन। यू प्लीज इसको ध्यान में रखें। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मीन्स ईस्ट के नॉर्थ में, नॉर्थ ऑफ वेस्ट मीन्स वेस्ट के नॉर्थ में, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। नॉर्थ साउथ ऑफ वेस्ट मीन्स वेस्ट के साउथ में। नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ मीन्स नॉर्थ के ईस्ट में। सेकेंड वन 25 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ 25 न्यूटन। And third force is given 30 Newton towards northwest. Northwest means this northwest. Northwest means exactly 45 degree. This is 45 degree, this is 45 degree. Northwest. What is the value? 30 Newton. 35 Newton inclined at 40 degrees towards south of west. 35 Newton inclined. 30 inclined at 40 degree towards south of west means west के south में। कितना डिग्री वेस्ट, ये वेस्ट है, इसके साउथ में नीचे कितना डिग्री है, ये 40 डिग्री मीन्स दिस इज 40 डिग्री। कितना वैल्यू है 35। यू गॉट। नाउ ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड स्पेस डायग्राम। नाउ ड्रॉ वेक्टर डायग्राम and draw the polygon, draw the diagram according to polygon law of forces or biographical method. First we are doing what we are doing, first taking a point P, first taking a point A. From A start, first force 20 Newton. 20 Newton is at which angle? 20 Newton is 20 degree angle, means 30 degree angle means is 30 degree, ये 30 डिग्री होगा। कितना जाएगा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। उसके बाद फिर 25 न्यूटन क्या होगा, किस एंगल में गया है 45 डिग्री मीन्स इस पॉइंट से सीधे जाओगे, यहाँ से उसके पैरेलल पे जाओगे, आप पैरेलल स्टार्ट करोगे, उसके पैरेलल क्या होगा 25, ये 2 सेंटी, स्केल क्या लोगे यहाँ पे, स्केल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन, क्या 25 न्यूटन। ये बी पॉइंट है, कहाँ पे पहुंच गए, सी पॉइंट पे। सी से फिर क्या करोगे 30 न्यूटन पैरेलल ले लो, उसके हिसाब से पैरेलल ले लो 35 न्यूटन, 30 न्यूटन कहाँ पे पहुंच गए, डी पॉइंट पे। फिर उसके बाद क्या है 35 न्यूटन, उसके पैरेलल ले जाओ 35 न्यूटन, कहाँ पे पहुंच गए, ई। अब ई से स्टार्ट एंड पॉइंट पे ज्वाइन कर लो। इन चारों फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। देन रिजल्टेंट, अब एंटी क्लॉक डाउनवर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अदर फोर्सेस, सो इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज वी आर गेटिंग रिजल्टेंट। इफ यू मेजर this distance, suppose this distance if 9 centimeter, then it is equal to 90 Newton, because 1 centimeter equal to 10 Newton. Thank you.